Good morning, everybody. Today, once again, we are gathered here to make another video on the topic of central problem. Right now, we have to deal with solution of central problem in different economy. In the previous video, as we discussed about, there are three types of economy: capitalist, socialist and mixed. And three central problem: what to produce, how to produce and for whom to produce. Right now we have to synthesize our two videos. One the central problem, another the types of economy. Whenever we face any type of problem, if we face any type of problem, the ultimate task of us to solve it properly. To solve a problem, a lot of alternative may available before us. If you wish to solve any problem, rarely for any problem there is a single solution. To solve any problem, a lot of alternatives available before us to solve it. How to solve depends on personal choice, knowledge, intelligence, behavior, perception, situation, etc. Therefore, come to the topic solution of central problem. Central problem, to recall the central problems of an economy. First, what to produce, and in what quantity. First, remember that the main problem is what to produce. Associated problem or subsidiary problem in what quantity or how much to be produced. Second problem is how to produce. And the third problem for whom to produce. Say the meaning: what to produce, how to produce, and for whom to produce. The first problem facing by any economy. It doesn't matter whether we are talking about India or economy of United States of America. Everyone facing the same problem: what to produce, how to produce, and for whom to produce. In the microeconomics, problems remain very solution remains unchanged. At the individual level or group level, we have to decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. If you wish to produce anything, first of all, a lot of alternative available before us. To solve the problem, what to produce, see the alternatives we have. If we wish to solve what to produce, see the alternatives. हमारे पास कितने alternatives हो सकते हैं to choose from any one suitable product for us to produce. To solve the problem what to produce, what we have to do, we should have proper knowledge regarding classification of the products.
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स कितनी वैरायटी की हो सकती है? प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड नेसेसिटी, comfortable and luxurious. Our product may compulsory, that is necessary, comfortable or luxurious in nature. Second classification, it may civil goods or civil goods and war goods. Civil goods, the goods for civilian, normal people, and war goods, the goods for military. Third, we may categorize our product between two: agricultural and industrial. Next categorization we already discussed in classification of products. It may consumer goods, and producer goods, and so on. ये कभी फिनिश नहीं होगी. You can categorize the goods on the basis of a lot of parameters between 2, 3, 4. Durable, non-durable, semi-durable, single use, multiple use, tangible goods, intangible goods, giffen goods or snobbery goods, etc. From this type of classification, to solve the problem what to produce, we have to choose anyone. Anyone on what basis? On the basis of availability, necessity, our knowledge, behavior, perception, or suppose there are two countries, one India, another China. See the similarity between two. Both are the populous country of the world. China number 1 populous country, India number 2 populous country of the world. How to decide the problem, what to produce, how to solve? One decided to produce more and more agricultural goods. Another decided to produce more and more industrial. Indian economy, popularly known as an agrarian economy, but Chinese economy is popularly known as a manufacturing economy. What? Indian economy, popularly known as agrarian economy, the economy which is based on agriculture activities, means most of the people of India are depends or engaged for their livelihood in the primary sector. Meaning the activities of most of the people associated with agriculture sector. That's why our economy is popularly known as an agrarian economy. But for People's Republic of China,
most of the people engage in manufacturing sector. It's manufacturing heaven of the world. Therefore, Chinese economy is an industrial economy. On that base, China decided to produce more industrial goods. India decided to produce more agriculture goods. That's why, from the classification, if you are aware with the variety of goods and services available in the market, you may select the best product for yourself to produce. After solving the problem what to produce, another subsidiary problem, जब भी हम सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ब्रॉड प्रॉब्लम what to produce, how to produce and for whom to produce. But one associated problem with the what to produce, how much. अब हमने डिसाइड कर ली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनानी है तो कितनी बनानी है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस बनानी है कितनी बनानी है, इन व्हाट क्वांटिटी. दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम हाउ मच is closely associated with what to produce. We have to discuss both the problem in the single topic. In the first problem, we have to solve what to produce and in what quantity. Perhaps for all the economy, everything is required. Agricultural product, industrial product and services. हर इकोनॉमी को तीनों चीज चाहिए, फार्मिंग भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए और सर्विसेज भी चाहिए. बट इन व्हाट क्वांटिटी इज डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. The second problem is how to see the alternatives for solution. How to produce. हमने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. We require to have combination of all three types of product, agricultural, industrial and services, and also fix the quantity of all three types of products separately. Then the next problem arises, how to produce. How to produce. There are two types of techniques we have. Labor intensive technology capital intensive technology. There are two types of technique we have, labor intensive and capital intensive. What the difference between two? One is labor intensive, another is capital intensive. Perhaps you people are aware regarding the factors of production. Our factors of production, factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. These are the four requirements to produce anything. हम कुछ भी बनाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए और इंडस्ट्रियल बनाए, सर्विसेज बनाए, we have to organize four
factors to produce anything. These are land, labor, capital, and entrepreneurship. If we require all four, how to decide labor intensive and capital intensive? In labor intensive, more weightage given to the labor. In capital intensive, more focus given to the capital. कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जहां लेबर और कैपिटल दोनों नहीं चाहिए, सब में दोनों चाहिए. बट वन रिक्वायर मोर लेबर, अनदर रिक्वायर मोर कैपिटल. द एक्टिविटी और टेक्निक इन विच more laborers are engaged to produce the goods and services is called labor intensive technique. And the techniques in which more capital required in comparison to labor to produce the goods and services is called capital intensive technology. One may decide to adopt the labor intensive, another may adopt the capital intensive. That's why after deciding what to produce and in what quantity, the next problem is selection of our technique. You must remember, our economics is a science to choose. आप देखोगे हर स्टेप में आपको कुछ न कुछ चूज करना. चूज क्या करनी? इन द फर्स्ट फेज वी ऑलरेडी डिस्कस. इन द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू चूज द प्रोडक्ट. इन द सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव टू चूज द टेक्निक. मीन्स एवरीवेयर वी आर ऑन द क्रॉस रोड. हम लोग 24 आवर्स 365 डेज चौराहे पर हैं, जहाँ से मल्टीपल वे क्रॉस. We have to select anyone at a particular point of time. हमेशा हमें किसी एक को चूज करेंगे, सबको एक साथ चूज नहीं करेंगे, because we cannot satisfy our all desires simultaneously, because we are having with our limited resource. Our desires are unlimited, but resources are limited. Resources limited है to for the utilization of limited resource, we have to select how to utilize our resources to get the best result, to fulfill our unlimited desires or wants. So, my dear students, the second problem solution is simple. Either labor intensive or capital. अगर आपको लेबर इंटेंसिव चूज कर लेनी है, अगर आपने लेबर इंटेंसिव चूज नहीं की, देयर नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू चूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. इन लेबर इंटेंसिव यू कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, बट इन कैपिटल इंटेंसिव यू कैन जनरेट लेस एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, for whom to produce. The third problem, for whom to produce. किसके लिए प्रोडक्ट बनानी है? किसके लिए? What we require to solve the problem for whom to produce. Do you aware with the terms? Segmentation. What we require? Segmentation of market. अब आप ऑब्जर्व करो. Try to observe our own market. The activities of producer in the marketplace. हमें क्या करना? Segmentation of the product. In simple, for whom decide allocation of resources among different sections of society. Allocation of product, income, whatever it is,
it's required to distribute. How to distribute the product produced in the economy among different people or group of society. लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट को डिवाइड कैसे करनी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी, एलोकेट कैसे करनी. अगर इंडिया की इनकम $135 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन 135 मिलियन 135 करोड़ है. 1 बिलियन 3.5 मिलियन. क्या हाउ टू डिवाइड आवर रिसोर्सेज अमंग द पीपल. सबको इक्वल देंगे, अनइक्वल देंगे तो लेस और मोर. एंड व्हाट पैटर्न वी डिसाइड to whom to provide more and to whom to less. That's why the next problem arises, allocation of resources. To suggest you alternatives is required. It's only for suggestion. Segmentation of market. अब मार्केट को देखो कि मार्केट की सेगमेंट कैसे है, मार्केटियर्स कैसे मार्केट को क्लासिफाई करते, डिफरेंट कमोडिटी, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स में कितनी वेराइटी की कंज्यूमर और प्रोडक्ट हो सकते हैं. वी ऑलरेडी क्लासिफाई द प्रोडक्ट, लग्जरियस, कंफर्टेबल, कंपल्सरी, सिंगल, मल्टीपल यूज. अब हमें देखनी है सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट. कितनी तरह की वेराइटी है. वन प्रोडक्ट में वीमेन स्पेसिफिक, example Lakme, the best example. Another product produced by a particular famous producer for children. One made for children, another made for women. Lakme, the famous brand for cosmetic, and Johnson & Johnson, famous brand for baby products. तो एक ने डिसाइड की कि हमारा मार्केट सेगमेंट ओनली इन्फेंट्स होंगे, बेबीज होंगे. दूसरे ने डिसाइड की हमें बेबीज की टेंशन नहीं है, वी हैव टू प्रोड्यूस द वीमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. अनदर may decide to produce the product for youngest people, all the sports brand. उनको नहीं चिल्ड्रन चाहिए, नो सीनियर सिटीजन चाहिए. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फॉर youngest people of the world. Next, may producer decide to produce the product for old age. See the status of pharmaceutical companies. They are producing the product for patients, not for strong people. Another, some new marketers produce the food supplement for the youngest generation. How to decide? For whom to produce? One product made a product of Apple Inc. Product for class of the people. Class of the people. सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना. The upper layer of the society. Second product made a product of Hindustan Unilever Limited. Product for masses, not for the classes. Means a lot of parameters we have to segmentize our market among different segments. एक पर्टिकुलर कंपनी ने डिसाइड की वीमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, उसे दूसरे सेगमेंट में डालने की. दूसरे ने डिसाइड की इन्फेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की, उसे अदर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं. तीसरे ने डिसाइड की उसे ज्वेलरीज बनानी, दूसरा को बनाने की जरूरत है. We are in the era of specialization. We have to decide for whom to produce
on the basis of availability of the resources, knowledge of our workforce, availability of raw material, government policy, etc. You can compare the two countries. One, any European country, a country from European Union, may Sweden, Denmark, Germany, France, Italy, etc. Another, any country from developing Europe, India, China, Pakistan, Bangladesh, etc. Almost all the developing countries are facing the crisis of essential goods and services. Essential goods, proper road नहीं है, sanitation facility नहीं है, care नहीं है, food, clothes, houses, etc. These countries are facing the scarcity of essential goods and services. But for the European, they are luxurious in nature. उन्हें essential item की जरूरत ही नहीं. No need to produce, no need to give more focus. What? Luxurious product. India decide कर सकती है कि उसे wheat ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है. जर्मनी डिसाइड कर सकती है उससे वाइन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है. Being an Indian, you can hate the society. What they are deciding to produce more wine. But in our country, in almost all the developing countries, we people decide to produce more wheat. That's why these are the problem and alternatives available before us. एक जगह आपको प्रॉब्लम पता है, दूसरी जगह प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं पता है. सॉल्यूशन के मल्टीपल चॉइसेस पता है. वी हैव मल्टीपल availability of solution. How to solve? This is the biggest question for any economy. Solution of central problem. So far, we are discussing about, or we are discussed about the central problem. Our main topic is concerned solution of central problem. How to solve? Solution of central problem in different economies. In different economies. Our economies are capitalist, mixed and socialist. We have three types of economy: capital economy, capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. We have to apply first to third, what to produce, how to produce, and for whom to produce in different types of economy. And we have to see or observe the activity of these type of economy to solve the problem. अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अभी ऑब्जर्व करना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट इकोनॉमी इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, almost all the member of European Union, South Korea, etc. Problem: what to produce? कौन decide करता है? There is more freedom to the individuals. In the capitalist economy, our individuals are free
to take their economic decisions. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल के पास फुल फ्रीडम है टू चूज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Being an individual, our opinion is, our assumption is individuals are rational. Rational means they have to take appropriate decision. हमारे इकोनॉमिक एजेंट कभी इरेशनल डिसीजन नहीं ले सकते. इट्स आवर एजम्पशन. में अगर यूरोपियन और अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाने के पहले ओनली वन मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मोटिव टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट. द गोल इनके डिसीजन बेस्ड होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. What we require to get more profit? अगर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है और सब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या क्या करना है? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. तो अगर हमारी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो रेवेन्यू मैक्सिमम अर्न करने की कोशिश करो. सेकेंड, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. रेवेन्यू इनकम ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए. सीधा एक्टिविटी ऑफ मल्टीनेशनल इन 21st सेंचुरी व्हाट दे आर डूइंग. किसी एक कंपनी को लो, कोई भी अपनी फेमस ब्रांड का प्रोडक्ट आप परचेज करो, उसके साथ लगे टैग को ठीक से करो, आपको समझ में आएगी हाउ टू गेट मोर. ब्रांड अमेरिकन और यूरोपियन होगी, मेड इन चाइना होगी. प्रोडक्ट जो आपकी फेवरेट ब्रांड है वो चाइनीज ब्रांड नहीं हो, पॉसिबल है वो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड हो, बट जब प्रोडक्ट की डिटेल पढ़ोगे इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज कंपनी. हाउ इट इज रीजन multinational company has to minimize their cost, and to minimize their cost, India and China is a safe haven because both are having with a surplus labor force. उनको इंडिया और चाइना में अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज भी है और वेजर्स भी है, लेबर्स भी है. तो टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे आर transferring their production unit right from America or Europe to China and India. Company American, European, but product बेचेगी made in China to minimize the cost. कहाँ बेचेगी? All the countries of the world. रेवेन्यू किस पर डिपेंड करती है? सेल्स पर. सेल्स कहाँ होगी? इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. मीन अगर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बननी है तो हमें चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है और इंडिया में सेल पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा हम सेल कर पाएंगे, चाइना में सबसे कम कॉस्ट इनकर करेंगे. तो टू वाइड द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट वन हैज टू टेक डिसीजन to search the suitable location, first for minimization of cost and second for maximization of revenue to get more and more profit. That's why in capitalist economy, everything decided by individual institution on the basis of demand and supply. इंडिया में लेबर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, डेफिनेट है वो प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में लगाएंगे. चाइना में सेम कंडीशन, लेबर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. मीन जहां लेबर की डिमांड कम है वहां प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर लेबर को कम वेज देनी होगी. ठीक है, यूरोपियन अमेरिकन इकोनॉमी में लेबर कम होंगे, डिमांड ज्यादा होगी. अगर वो लेबर वहां हायर करते हैं, हायर कॉस्ट बियर करनी होगी, हाई वेज पे करनी होगी. दैट्स व्हाई
इंडिया और चाइना की नेचुरल रिसोर्सेज भी अनयूटिलाइज, अभी तक हमारी कैपेसिटी नहीं है टू यूटिलाइज आवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑन our own effort. That's why we are inviting people from abroad to come and make in India. That's why what they did in our countries like India, China, उनको सस्ते लेबर और सस्ता रॉ मटेरियल दोनों एक साथ मिल जाते हैं, बिकॉज इंडिया चाइना में लेबर भी अवेलेबल है और नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, वो भी अनयूटिलाइज. That's why to make a good profit or to maximize the profit, the choices of multinational companies from Europe and America to target China for manufacturing sector, India for outsourcing, to minimize the cost and to sell more and more across the world. In socialist economy, the goal is social welfare. Welfare of society doesn't matter. पॉपुलस कंट्री है तब तो लेबर इंटेंसिव. प्रोडक्ट किसके लिए बनाएंगे? मास के लिए, नॉट फॉर क्लास के लिए. जितनी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी वो प्रोडक्ट बनाएगी अपने मासेज के लिए, नॉट फॉर क्लास के लिए. यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगी क्लास के लिए, नॉट फॉर मास के लिए. क्लास जिसके पास परचेजिंग पावर है, मास जो वीकर सेक्शन है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड और अथॉरिटी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom to produce to raise the welfare of society. Only one goal for socialist economy, how to raise the welfare of society. तो यहाँ हमारा एक ही टास्क है, welfare of society. We are having with our given limited resource, and resources have alternative use to choose the best utilization of resources, not to make good profit, to raise the welfare of society, living a standard of the bottom line society. Mixed economy, partial freedom, partial control, both parties decide. You can take the examples of India. इंडिया में स्कूल गवर्नमेंट की भी होगी, प्राइवेट की भी होगी, हॉस्पिटल गवर्नमेंट की है, प्राइवेट भी है, ट्रेनें गवर्नमेंट चलाती है, मेट्रो गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर चलाती है. व्हाट डू यू थिंक? Whenever we discuss about the decision of solution of central problem, what to produce? After India decide divide all the product between merit and non-merit. मेरिट है गवर्नमेंट की कंट्रोल है, नॉन मेरिट है इंडिविजुअल की कंट्रोल है. वी कैटेगराइज ऑल द प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. बिटवीन टू देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर एफर्ट ऑफ बोथ द पार्टी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट, दे आर having with the same opinion like capitalist economy. They have to produce more and more goods and services to make good profit or maximum profit. And the products which are required for mass level of consumption categorized under merit group by the government. Doesn't matter whatever the cost or price. Government had to maintain proper supply of that type of product. Proper supply of that type of product to maintain equity, social justice, to maintain equity or social justice, to uplift the standard of living of the people. People, the normal people, weaker section, to minimize the weaker section, to remove poverty, to raise employment, means government जब भी decision लेंगे, more and more employment, because we are facing the burden of population. We are facing the population explosion. That's why government has to decide how to produce more and more employment, not the goods and services. Individual decide to produce more and more goods and services to sell it best possible price to all income or profit. Government decide to produce more and more employment, not to produce more and more goods and services. That's why in all three types of economy, solution diagram, problem remains unchanged.
what to produce, how to produce और whom to produce. इकोनॉमी डिसाइड करेगी उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. ओके, यू कैन कंक्लूड योर टॉपिक. इन कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम is given, that's when individual decide on the basis of demand and supply. In socialist there is command of the government. Government decide what to produce, how to produce, for whom to produce. In the mix, it's effort, the mixed effort of both the groups, private and government. Some freedom provided to the private sector. They have to take decision for their own income, profit, etc. by minimizing cost and maximizing revenue. And some product categorized under exclusively reserved for the government. Government decide to produce the goods and services for welfare of the society. Nothing more. That's all. Thank you all. We'll meet in the next video with the next topic. Okay. Thanks.